Good morning, student. Today we are going to study our next disease, which is very important. That is AIDS, and AIDS is the virus disease. So let us see about the AIDS. So AIDS was first reported in USA in year 1981. You should remember this thing. कि first time कहाँ पे report हुआ था AIDS का? USA में which year? 1981. And 1 December is a World AIDS Day. Okay. These two questions may be asked for one sentence or the MCQs. Okay. Next is the India started a national AIDS control program in 1987. What is the symbol for that AIDS? So a red ribbon. Can you see here? The red symbol? It is a red symbol for the AIDS. What is the symbol indicate? It indicates that the awareness and support for people living with HIV. Okay. In India, the first confirmed case is found in 1986 in which where so in Chennai. So in April 1986 the person is found which has the AIDS which was has the AIDS is the in a Chennai. Okay, it has spread all over the world. Near about 25 million persons are dead in a world because of that AIDS. In India, there are 4 AIDS references centers are there. कौन कौन से 4 centers है इंडिया में स्पेशली? सो एम्स दैट इज AIIMS which is situated in New Delhi. The National Institute of Virology which is situated in Pune. Virology means it is in that virology the study of different types of viruses. Okay, so it is called as the virology. Third center is the Center of Advanced Research on Virology, which is in Vellore. And then the last one is the National Institute of Communicable Disease, which is situated in the New Delhi. So these are the 4 different AIDS references centers are in India. Specific India में ये जो 4 reference AIDS के references centers. Okay. Next, now we study that what is the AIDS. AIDS you should write down in a capital because it has the long form. So AIDS is long form is acquired immunodeficiency syndrome. Okay, so AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. The syndrome or that AIDS is the modern pandemic. Pandemic means AIDS ये सिर्फ एक ही देश में नहीं है. AIDS के infected persons are found in number of countries like a corona सिर्फ इंडिया में है नहीं, चाइना, अमेरिका, all the countries are having that corona. So that's why it is called as the pandemic. So AIDS is also has the pandemic means it is spread all over the world or worldwide. So AIDS is also called as the modern pandemic. Corona is also called as the modern pandemic. Then acquired immune deficiency syndrome, ये एक्वायर्ड किया गया है. इट्स अपने को होता नहीं है. इट्स दिस इज एक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द इम्यून डिफिशियंसी. कि इम्यून डिफिशियंसी की वजह से ये आपको एड्स होता है और इट गिव्स द सिंड्रोम. सिंड्रोम मीन्स नंबर ऑफ सिम्टम्स आर देयर. कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है एड्स का. देयर आर नंबर ऑफ सिम्टम्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट ईजिली आइडेंटिफाई द पर्सन हैज़ द एड्स और नॉट. ओके, that AIDS is also called as the STD. STD means it is a sexual transmitted disease. Okay, this means the deficiency of immune system. Immune system is very important part of the body which protect or defends from the microorganism, which any microorganism if it enter into our body or try to enter into our body, our immune systems are protected. Okay, we we make a next video on that immune system. Okay, so the immune system acquired after during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease, which that AIDS is caused because of the HIV virus or a HIV. So AIDS किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से होता है, which is called the long form of that HIV is human immunodeficiency virus. So which is the causative agent of AIDS? So HIV. Okay, the question is asked for that. Write down the causative agent for AIDS. और
the causative agent, that is a human immunodeficiency virus, is cause which disease? It may ask like this. Okay, so that AIDS is caused because of HIV, that is human immunodeficiency virus, a member of a group of viruses. It is a group of virus which is called as the retrovirus. You should remember these things. Okay, so HIV, it is a retrovirus which has an envelope enclosing the DNA. Means retrovirus, the virus, each and every organism has their genetic makeup or genetic information. Like human having the genetic material is DNA, that is deoxyribose nucleic acid. But that retrovirus or HIV has the virus, and it is the genetic material is RNA, that is the ribonucleic acid. You should remember this thing. Then that virus attacks immune system, means when that HIV enter into our body, they attack our immune system. अगर उन्होंने अपने immune system को ही affect किया तो we can infected with number of disease. अगर अपनी immune system ही कम होगी, इसलिए बोला जाता है कि कोरोना में जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छी है उनको कोरोना नहीं हो रहा है. ओके, क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम पे डिपेंड है. जिनकी इम्यून सिस्टम अच्छी है उनको कोई डिजीज़ नहीं होती. लेकिन दैट एड्स इज़ और दैट HIV इज़ इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम. अगर आपकी इम्यून सिस्टम ही वीक है तो आप कौन सा भी इन्फेक्शन ईजिली कैप्चर कर लेते. ओके, सो दैट वायरस इज इन्फेक्ट ऑन देयर immune system. Let us see the structure of that HIV. So it is the structure of HIV which is somewhat spherical, rounded in structure, which is near about 100 to 114 nanometer in diameter. Centrally you can see here, आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेंट्रली ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है. सेंट्रली लोकेटेड 2S शेप, ये जो S शेप स्ट्रक्चर है विच इज सिंगल स्टैंडर्ड RNA. As I told you, virus having the genetic material is RNA, ribose nucleic acid. Here is a single stranded RNA is there, and except that RNA or S shape, there is a rounded structure is there. Okay, can you see here? Green like. Okay, so these are the reverse transcriptase enzymes, which is very important. You should remember these things also, that HIV having the genetic material RNA and has the reverse transcriptase enzyme, which is very important. Okay, then it covers the two layers. Okay, first is the outer is the matrix protein, that is P17. That yellow, can you see here? That yellow layer is the outer layer which is P17, that is a protein 17 matrix protein. Okay, and the inner one is the that blue color. It is a capsule which is P24 or a protein 24 capsule protein. Except these two layers, the outermost layer is there. One more layer, can you see here? Which having that purple and red color structure, which is called as the glycoprotein. Can you see here? GP means the glycoprotein. A name of their glycoprotein is there. That is the glycoprotein 120, which is that purple hair like structure, which is the envelope protein, that is the GP120. And just below that the red color is there, which having the body part like, so it is the outer trunk like structure, which is glycoprotein 41 envelope protein. Okay, and these are very important because that GP120 envelope protein, can you see this blue color or purple color, which having the outer covering, and that outer covering has the non-antigenic property. Non-antigenic property is important. Why? Each and every microorganisms, जो कुछ भी वायरस बैक्टीरिया अपने बॉडी में एंट्री करने वाला है, उसके पास एक एंटीजन होता है. बिकॉज ऑफ दैट एंटीजन दे कैन एंटर इनटू अवर बॉडी. ओके, और वो एंटीजन हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करती है, हमारी इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करती है और एंटीबॉडीज फॉर्म करती है कि जो एंटीबॉडीज इस वायरस को, बैक्टीरिया को, जो जिनके पास एंटीजन से उन्हें किल कर देंगे. बट दैट वायरस, as I told you, that glycoprotein 120
that head part which contain the outer layer, and that layer is having the non-antigenic property. Non-antigenic means जब वो हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो हमारे बॉडी की जो एंटीबॉडीज है कैन नॉट आइडेंटिफाइड दैट वायरसेस. क्यों? बिकॉज दे हैविंग द नॉन एंटीजेंस, and because of that they are easily enter into our body. Okay. So these are the glycoproteins, that is 120 and glycoprotein 41. And one more unique ability of that virus is it destroy the human T4 lymphocytes, which is very important for our immune system. So this is the simple structure of that HIV virus. So here just remember that genetic material is RNA or single standard molecule RNA. Then reverse transcriptase enzymes is important here. Then glycoprotein 120 and glycoprotein 41 is there. Outer and inner layer is also here. Okay, and what is the unique ability of that virus is to destroy the human T4 lymphocytes. Okay, so next one is the, yes, as I told you that HIV virus having the single standard RNA which is responsible for the causing the disease, and human body having the genetic material is DNA. But in some viruses or such viruses, RNA is the genetic material which is including the retrovirus group. So in normal human body, हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि DNA इट्स कन्वर्ट्स इनटू द mRNA बाय द ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, देन mRNA से प्रोटीन फॉर्म होता है क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन से तैयार हुई है. सो DNA टू प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डोग्मा. ये ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, सिर्फ उनकी जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होती है. बट हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल DNA है और RNA के वायरस के बॉडी का genetic material RNA. So what happened when that RNA enter into the human body or our body, that RNA is converted into the DNA with the help of reverse transcriptase enzymes, जो कि हमने देखा था यहाँ पे. Okay, so that reverse transcriptase enzymes is used to convert that RNA into the DNA. If it convert that RNA into the DNA, so after that process, that is the central dogma is automatically formed in our body. Okay, so this is useful. Means this virus है, वायरस के ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन है. ग्लाइकोप्रोटीन आइडेंटिफाई नहीं होता क्योंकि नॉन एंटीजन है उसके ऊपर. देन वो एंट्री कर लेता है बॉडी में, बॉडी के सेल्स में, ह्यूमन के बॉडी सेल्स में एंट्री करने के बाद उसका जो जेनेटिक मेकअप है और जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर डाल देता है. उसमें RNA है, वो RNA DNA में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स. ओके, एंड देन वो अपना DNA जो है कि रिप्लिकेशन होता है. एक DNA के दो DNA फॉर्म हो जाते हैं, उसके डुप्लीकेट कॉपीज फॉर्म हो जाती है. अपनी DNA के डुप्लीकेट कॉपीज फॉर्म होते टाइम ही उनके RNA की भी डुप्लीकेट कॉपीज फॉर्म हो जाती है, एंड दे मेक्स देयर numbers increases. Okay, one enter into here, number of viruses are formed. Okay, so this is the short life cycle of that HIV, and this is the process when the virus enter into our body and how we treat it. Okay, so this is for your notes, read it once. Mode of transmission, how that HIV enter into the human body. So see here, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन. अगर इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि उस एड्स से उनके साथ अगर सेक्स किया जाए तो वो HIV कैन बी ट्रांसमिट दैट हेल्दी पर्सन. देन ब्लड ट्रांसमिशन, अगर हम किसी का ब्लड ले रहे हैं तो उस ब्लड को सेफली देखना पड़ेगा कि येस इट इज़ अ गुड और नॉट, बिकॉज इफ इट इज़ इन्फेक्टेड विद HIV देन पर्सन गेट HIV टू. नीडल शेयरिंग, अगर इन्फेक्टेड पर्सन दैट इज एड्स पर्सन की नीडल हम शेयरिंग कर रहे हैं बाय मिस्टेकली, देन ऑल्सो इट कैन ट्रांसमिटेड. देन मदर टू फीटस ऑल्सो, एंड एक्सीडेंटल नीडल ऑल्सो. हियर इज द वन you can see in a pictures, then you can easily understand. So unprotected sex with an infected person, अगर हम इंजेक्शंस जो कि जिसके नीडल से अगर वो यूज़ की हुई हो
तो भी इन्फेक्टेड हो सकती है। अगर कोई पर्सन को HIV है और उनकी नीडल हम यूज़ कर रहे हैं, सो इट कैन बी स्प्रेड, इट्स कैन बी स्प्रेड। देन अगर मदर को एड्स है, सो द ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू देयर फीटस ऑल्सो। ओके, देन ब्लड का मैंने बोला था कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन जिनको HIV पॉजिटिव है, उनके बॉडी में HIV और वायरस है, दे कैन ट्रांसमिट थ्रू दैट ब्लड आल्सो। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अगर हम किसी का ऑर्गन ले रहे हो, मे बी द किडनी और हार्ट, तो यू शुड check that person who donated the organ, that person should not be have the AIDS. Then insemination is also there. If you take the sperms from any person, and if that person is the infected, then also you get the AIDS. So these are the different mode of transmissions. Now symptoms is very different, because we know that it is a syndrome. Syndrome means the group of symptoms is there, not any specific. एक कोई symptoms नहीं है, उसके बहुत सारे symptoms हैं, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उस पर्सन को एड्स है या नहीं। ओके, उन्होंने वहाँ पे 4 डिफरेंट कैटेगरीज दी है, जैसे कि इनिशियल इन्फेक्शन है, सो इनिशियल इन्फेक्शन विद द वायरस एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। बट दैट एंटीबॉडीज कब फॉर्म होंगी हमारे बॉडी में? यूजुअली 2 to 8 वीक्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। 2 से 8 वीक के बाद एंटीबॉडीज़ फॉर्म होने लगती। ओके, एंटीबॉडीज़ मैंने बोला था, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती है उनको किल करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द सिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट, मीन्स कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता। ओके, नो साइन ऑफ डिजीज आर सीन। इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 6 months to 10 years। आप यहाँ पे याद रख सकते कि 6 महीने से लेके 10 साल तक में भी कोई सिम्टम्स दिखाई ना दे, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते कि उस पेशेंट को एड्स है या नहीं। ओके, नेक्स्ट इज द एड्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स, इट इज ARC with 1 or more of the following clinical signs: recurrent fever for longer than 1 month, 1 मंथ से भी ज़्यादा आपको अगर फीवर आ रहा हो तो इट इज़ इंडिकेशन। देन फटिक, आप थक जाते हो ज़्यादा। देन अनएक्सप्लेन डायरिया, लूज मोशन हो जाती है। देन नाइट स्वेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेस्पिरेटरी समवट प्रॉब्लम। देन लॉस ऑफ मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट, आपका जो बॉडी वेट है वो डिक्रीज हो रहा है। these are the different symptoms. Because of that we can understand that yes, the virus enter into that person's body. Okay, AIDS is the end stage of HIV infection. अगर हम बोल रहे हैं कि किसी पर्सन को इट इज़ HIV पॉजिटिव है, यानी कि उसे एड्स है ऐसा नहीं है, दैट वायरस इज एंटर इनटू हिज बॉडी जस्ट। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कि HIV पॉजिटिव है, लेकिन उसे एड्स से कब बोलेंगे? जब वो इन्फेक्शन हेवियर हो जाएगा, तब उसे एड्स से ऐसा कह सकते हैं। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक बाय लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अगर HIV ने इन्फेक्शन कर दिया था, एज आई टोल्ड यू, दे डिफेंस और डिक्रीजेज द इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम हमारी उसकी पावर जो है, या इम्यून सिस्टम हम अच्छी रखना चाहते हैं, वो जब कम हो गई तो कौन से भी इन्फेक्शन हमें इजीली हो सकती है, जैसे कि निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और कापोसिया सार्कोमा, लाइक दिस। ओके, देन डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं? अगर इस कोई सिम्टम्स हमें दिखाई दे फ्रॉम दिस, आउट ऑफ दिस, सो हाउ कैन आइडेंटिफाई दैट पर्सन? सो इफ़ यू गेट सम सिम्टम्स, उसमें से कोई भी एक सिम्टम्स हमें दिखाई दिया और हम डॉक्टर के पास गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेक द फर्स्ट टेस्ट, दैट इज द ELISA. You should remember these test, ELISA, because most of the time the question is asked there, which test is used for the AIDS, or ELISA, the test is used for which disease. Okay, so ELISA means enzyme linked immunosorbent assay. Okay, you should remember this. The confirmatory test is usually a Western blot. It is a highly specific test. It is based on the detecting specific antibodies to the viral core protein and envelope glycoproteins. Then HIV has been found. That virus specially कहाँ पे found होता है? So virus has been found in saliva. Saliva means the sticky substance present in our mouth. Okay, this is the saliva. Then tears.
आँखों के जो आंसू होते हैं उसमें हम पा सकते हैं। द नर्वस सिस्टम टिश्यू, द स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड में हो सकता है, सीमेन में, देन वजाइनल सिक्रीशन में और द ब्रेस्ट मिल्क में। इन दिस थिंग्स वी कैन गेट द HIV वायरस और HIV। देन ये जो डिफरेंट थिंग्स हैं जिसकी वजह से एड्स स्प्रेड नहीं होता, लाइक कफिंग। अगर एड्स पर्सन हो, उन्होंने खांसी की, तो HIV वायरस स्प्रेड नहीं होता है। देन शेकिंग हैंड्स, अगर उनके हाथ से हम हाथ मिलाएं तो भी HIV स्प्रेड नहीं होता। देन शेयरिंग निपर्स, उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो वो यूज़ कर रहे देन हमें दे रहे, फिर भी वो स्प्रेड नहीं होता। इफ़ यू ईटिंग टुगेदर, देन mosquito bite, swimming pools, using the public toilet, kissing, embarrassing. These are the different things. Because of that, HIV not get spread. Okay, so these are the different things. And now the treatment. What is the treatment for that AIDS? So antiretroviral therapy. You just remember this treatment also, which is very important. Antiretroviral therapy, which suppress the replication of that HIV virus. हमें वो रिप्लिकेशन है को 1 से 2 बनते हैं जब DNA और दैट RNA, तब वो बनना हम रोक सकते हैं, उनका सप्रेस कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. नेक्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स which is called as the HAART, not HEART. This HAART means HAART. It should be capital because it has the long form as highly active antiretroviral therapy. What? Highly active antiretroviral therapy. That question may be asked for this. Okay. It is very effective. Why? Because it is reduce the number of HIV particles in the blood stream. अगर हम उनका ब्लड चेक कर ले तो ब्लड में हम HIV वायरस के पार्टिकल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट हार्ट. अगर हमने ब्लड में के जो HIV वायरस के पार्टिकल्स हैं उसे ऑब्जर्व कर लिया, सो उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HIV कहाँ तक स्प्रेड हो चुका है. ओके, सो दिस आर द ट्रीटमेंट. And the last one is the prevention. How to prevent that AIDS. So as AIDS has no cure, उस पर कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये ड्रग्स लेने से वो पूरी तरह ठीक हो जा सकते, नहीं. उसे हम कम कर सकते लेकिन पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते. ओके, सो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज a NACO, and the other non-governmental organization, that is NGOs, doing the lot of work, that is educate people about the AIDS. लोगों को एड्स के बारे में बताना और अवेयरनेस फॉर्म करना. WHO, that is the World Health Organization, has started a number of programs to prevent the spreading of that HIV infection. Then जो हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखे थे, जैसे कि ब्लड के थ्रू वो पास होता है, देन सीरिंज के थ्रू, वो सब हम यहाँ पे लेंगे जस्ट टू अवॉइड दैट. इट इज़ अ प्रिवेंशन. ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वहाँ पे जो था वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे ले सकते हैं. बस इतना रखना है कि वो अवॉइड करके, जैसे कि हमने वहाँ पे लिया था कि नीडल और सीरिंज यूज़ करने से ट्रांसमिशन होता है. यहाँ पे हम क्या लेंगे? डिस्पोजल ऑफ दैट नीडल एंड सीरिंज. ओके, इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक. Then free distribution of condoms. Why? To protect them that unprotected sex. Okay, so this condom is useful for that. Then the next one is regular checkup for the HIV, because we know that their symptoms cannot easily come after a long period. They can come after a long period. जल्दी उसके सिम्टम्स आते नहीं. सो रेगुलरली चेकअप करते रहेंगे तो इफ़ इट गेट, अगर कोई वायरस या HIV हमारे बॉडी में एंटर किया है और हमने इंस्टेंट उसे पहचान लिया है बिकॉज ऑफ दैट रेगुलर चेकअप, देन वी कैन रियली डू द great work for that. Then some the important things about that AIDS, that is the National AIDS Control Organization, that is a NACO, was set up in year 1992 by the Ministry of Health and Family Welfare. The aim of this organization is to prevent the further transmission of HIV. उनका एम क्या है, गोल क्या है कि जो HIV के ट्रांसमिशन है
वो प्रिवेंट करना और डिक्रीज करना क्या, मोबिलिटी एंड द मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद द HIV इन्फेक्शन एंड मिनिमाइज करना जो कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है विच इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द HIV इन्फेक्शन. So these are the important things about the HIV. So you should remember the treatment, prevention, then transmission of mood, causative agent, this thing about the AIDS.